everyone, welcome to the new video with the new chapter, conjunctions. So let's start the chapter. Chapter 17, conjunctions. So in this chapter, you will learn what is a conjunction, kinds of conjunctions. What is a conjunction? Read the following sentences carefully. Shiva is going to school, Gauri is going to school. Shiva and Gauri are going to school. Akshat is reading, Neha is sleeping. So Akshat is reading, but Neha is sleeping. You can take tea, you can take coffee, you can take tea or coffee. So the above pairs of sentence are joined by the words हम join किसी word से join हो रहे हैं जैसे and, but, और. तो hence these are the joining words कहते हैं, हम इनको conjunctions कहते हैं. तो thus we can say the words that join words और sentence को जो join करते हैं किसी भी दो words को sentences को होते हैं conjunctions. Always remember such words that link sentence words और group को link करते हैं words के उन्हें हम conjunctions कहते हैं. काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कंजंक्शन एंड जो होता है उसको कहते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इट जॉइंस टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है. अदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है फॉर, नॉर, बट और येट सो. फॉर हम यूज करते हैं रीजन बताने के लिए. शी कुड नॉट बाय द कार फॉर शी डिड नॉट हैव इनफ मनी. एंड हम यूज करते हैं किसी चीज को एडिशन करने के लिए, ये भी और ये भी. तो आई बॉट माई मदर अ स्कार्फ एंड शी लव्ड इट. नॉर हम यूज करते हैं डिनोट करने के लिए एंड नॉट. दीपा डिडंट फिनिश हर पोम नॉर डिड शी फिनिश हर होमवर्क. उसने दोनों में से कुछ नहीं किया. बट यूज टू डिनोट कंट्रास्ट. बट हम यूज करते हैं लेकिन जिसे कहते हैं. आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी. और हम यूज करते हैं डिनोट ऑप्शन या फिर चॉइस. यू कैन स्टे हेयर और गो अवे, रुको या जाओ. येट यूज टू डिनोट आउटकम क्या आएगा. अक्षत एट एन एंटायर केक येट ही वाज स्टिल हंग्री. सो हर यूज टू डिनोट रिजल्ट. Chavi didn't have enough money to fly to Delhi, so she took the train. Always remember a comma is used to along with the coordinating conjunctions to connect दो independent sentences को connect करता है. It is important to note that एक comma को never place coordinating conjunctions के बाद हम कभी comma नहीं लगाते हैं. Shivi ate 2 pastries but she was still hungry. You must be quiet or you must leave the room. Harsha studied a lot yet she didn't pass the test. फिर आता है आपका next correlative conjunctions. Another type of conjunction is the correlative conjunction. These are the words that are always हम pairs में use करते हैं. These are both and, not only but also, either or, neither nor, whether or. तो ये हमेशा pair में साथ साथ चलते हैं. To add one statement or fact to another. एक statement या fact हम दूसरे में add कर रहे हैं. Both Avi and Avni, they are my students. He bought not only some flowers but also a cake for her birthday. टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन दो अल्टरनेटिव है, उनके बीच में आपको कोई चॉइस एक्सप्रेस करनी है, तब आप यूज करोगे वी विल गो आइदर टू मार्केट और टू द मॉल टू बाय अ ग्रोसरी. नाइदर शुगर नॉट शिखा अटेंडेड सागर नॉट शिखा अटेंड माय बर्थडे पार्टी. आई डू नॉट नो वेदर आई शुड ऐड शुगर और टी टू दिस डिश. When using correlative conjunction, we must remember to use the same part of speech को हम यूज करेंगे after each part of their pair of conjunctions के बाद. I bought not only pastries but also brownies for the party. Noun after not only and noun after but also. She is neither rich nor poor. Adjective after neither, adjective after nor. When we have to begin the sentence with the first part of the correlative conjunction के साथ हमें शुरू करना पड़ता है. तो this is how we should construct the sentence. Not only did I buy pastry but also bought brownies for the party. Neither is she rich nor is she poor. So there is a third kind of conjunction जिसको हम subordinating conjunctions भी कहते हैं, but इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. Thus we are combining two sentences and hence maintaining the balance. उसमें sentence में हम maintain कर रहे हैं. There is no need for commas before correlative conjunctions within a sentence. Now it's time to answer. Tick the correct option. The conjunctions join two word sentences, दोनों को join करता है. Conjunctions are also called joining words. This is a conjunction but. This is not a conjunction, out. Fill in the blanks in the following sentence. Appropriate conjunctions हमें इसमें fill करने हैं. Drivers left the deserted station dash headed for the next stop. And Shivi is keen dash Deepa is absolutely excited. But you need to leave dash they will force to call the guards. You need to leave or they will be forced to call the guards. So like this you have to use the conjunctions. Now join the following pairs of sentences with appropriate coordinating conjunctions. Little bird flapped its wings, it flew away. And flew away. Jay called out to the taxi, but it didn't stop. He was punished, he was guilty. He was punished, so he was guilty.
He's very rich, he's not happy. He's very rich, but not happy. So like this, you have to complete this exercise. I hope you all have understood the chapter. Go through it again. Do the exercises carefully. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.